So screen देखा होची? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So last class में Government of India Act 1935 को discuss कर देते right पूरा. So finish कर देते हमें Government of India Act 1919 को discuss करी था ना कर देते थे. I think करी था right? Yes, sir. Okay, quickly tell me some of the points. कौन है तमें? Sir, गोटे डाउट थिला टिके. हाँ, को. सर एक्चुअली पचार थिला जे आमे एबे जॉइन हिचु तो प्रीवियस रो जो डिस्कशन गुडा को आमे कोठ पाइबु से गुडा को रिकॉर्डिंग गुडा को. I think से description देखो, description drive रो link थिबो. आज्ञा. चेक देखि दियो. एटे जहाँ भी PDF थिबो कि ठीक है. तापर हमें डायरेक्ट विषय डिस्कस करिवा. तो क्विकली टेल मी द प्रोविजंस. Okay. काय आसिला? So introduction of diarchy. Okay, diarchy in the provinces. Bicommunalism in the center. Very good. Separate preamble. Gradual development of responsible government. Okay. Separate preamble. Preamble थी लगी? I'm not sure. But yes, announcement करते so they will gradually like provide dominion status to India. So सेटा हेतिला. More representation of Indians. Okay, ठीक है. लेकिन चैट लिखा. लिख दो. Okay. Sorry. Vote on 25% budget. Okay. Budget रे voting करे right मिली थी ला. Separate electorate to 6 Christians, Anglo-Indians. First time direct election in the country. Direct election, अच्छा 1909 रे हमारा जो हेतला franchise it was not direct. Established RBI ना ना हमें 1935 Act से discuss करनो. Transport subject. ठीक है starting रू करियो कि late join करो. Oh, starting रू just what brainstorm करतो. हमें Government of India Act जो 1919 विषय discuss करतो. So whatever points you know you can write. Then we will start the discussion. Right to vote was given to women. Okay, first time पे दिया इतना right to vote. Office of High Commissioner. Okay. Establishment of Public Service Commission. Very good. Yes. It was a kind of partial responsible government. Discuss भी करिया हमें डायर के तो discuss करिया. We'll discuss this. Okay. So I think we have got all the points, maximum points of ASEAN line. Kichi we'll see, right? So I think maximum point we discussed first already. So now let's see कौन जानी चाहिए. समझ देखा हो जी? देखा हो जी PDF right is visible right? Yes, sir. Okay. So basically Government of India Act of 1919 जोटा कि हमारा Montagu Chelmsford reforms हमें कहूँ. So it को background थिला. So how it was given. So the background was हमारा basically it हमारा like already हमारा home rule movement चलथिला, right?
so the home rule movement तमरो यारे एनी बेसेंट एंड तमरो तिलक लॉन्च करथिले so काफी like mobilization thila large scale mass participation thila like they were using different तमरो newspapers हे गला right तमरो तिलक का newspapers तमरो मराठी हे गला केसरी हे गला यारे एनी बेसेंट को newspaper तमरो कॉमनवेल्थ हे गला तमरो जो न्यू इंडियन ना कोन न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ हे गला so एई सब रे पॉपुलराइज करथिले तमरो होम रूल एक्सप्रेस ऑफ ट्रेन्स चलथिला सेडे होम रूल कोन एंड ऑल मोबिलाइज करथिले तो काफी माने बुली बुली तमरो पैन इंडिया तमरो मास मोबिलाइजेशन करछन्ते एंड गोटे प्रेशर थिला ऑलरेडी गोटे वार चलथिला फर्स्ट वर्ल्ड वार बैकग्राउंड चलथिला एंड हियर द इंडियंस जो कांग्रेस दे वर बिल्डिंग प्रेशर by this home rule movement right तो ता प्रेशर रे आसी करी so तमरो 1917 रे फर्स्ट टाइम तमरो जो हमरो मोंटागो जो सेक्रेटरी ये थिले हमरो so लॉर्ड मोंटागो सी हमरो गोटे अनाउंसमेंट करथिले 1917 रे कि हमें गोटे द ग्रेजुअल हमरो अल्टीमेट एम हैला टू प्रोवाइड ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट स्टेटस टू इंडिया राइट तो एमे गोटे अनाउंस करथिले आफ्टर दैट द होम रूल मूवमेंट से डिसिपेट हे गला ऐसे माने देखले तमरो कि ओके मॉडरेट्स मन देखले कि नहीं एमन तो हमहु दउचंती एंड देन स्लोली दे स्टॉप्ड माने एते तारा जो एनी बेसेंट ऑफ तिलक प्रति जो एते ये थिला like they were leading the movement and slowly it faded right तो से movement तमरो स्टॉप हे गला तो एई बैकग्राउंड थिला right so if we want to write little bit introduction हम से लिखि परिबा कि एटा तमरो वर्ल्ड वॉर 1 right so this was launched in sorry this Montagu Chelmsford reforms or Government of India Act of 1919 it was the constitutional advancement the act thila which was introduced in the year 1919 right by tamara Lord like Chelmsford and Lord Montagu right our Governor General Viceroy Chelmsford and Lord Montagu our Secretary of State thila introduce thila and background kon thila we can say that कि तमरो वर्ल्ड वॉर 1 चलतिला वर्ल्ड वॉर 1 and due to the rising pressure of the home rule movement so the British introduced this Montagu this Government of India Act of 1919 तो एटा किछि हमरो इंट्रोडक्शन हम बैकग्राउंड एटा लिखि परिबा राइट तार डेट विषय लिख देले इंट्रोड्यूस कर देले प्रथम डिफाइन कर देले एटा हमको 1919 में इंट्रोड्यूस हेतिला गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट गोटे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल जो इवॉल्व होई छि जो डेवलपमेंट होई छि तो इट वाज ए एक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया राइट जो थे कि इंडिया को हमें कहबले गोटे पार्शियल रिस्पांसिबल गवर्नमेंट दिया जायतिला राइट एंड तमरो बैकग्राउंड वी कैन से ड्यू टू द राइजिंग प्रेशर ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 1 एंड ड्यू टू द ऑनगोइंग होम रूल मूवमेंट दिस वाज अनाउंस्ड राइट तब आर प्रोविजंस देखिबा हम डिस्कस करले bicameral legislature was created at the center comprising of Central Legislative Assembly and Council of States right dita house tomoro the center re bicameral legislature asigala gote tomoro like Central Legislative Assembly gala then Council of States like currently ama jemti Lok Sabha Rajya Sabha achi se bela asigala this represents the tomoro states tara sabu like members nominate astive and then this is the Legislative Assembly right then tomorrow the administrative matters were divided between center and provincial government by creating two lists central list and provincial list koya gala it was the first attempt je ki tama provinces ku gote responsible gote clearly segregate kar dala ira gote central list and gote provincial list right first time gote recognition diya gala gote provinces ku though ame already dekhithile 1935 our Government of India Act 1935 रे काफी बेसी हम प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस दे देले जो इंडिपेंडेंस नथिला एठी एक काइंड ऑफ गोटे पार्शियल हमें कहि परिया गोटे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट दो चेष्टा करथिले काहे की पार्शियल हमें आगर देखिबा डायर की इंक्लूड करके पार्शियल कर देथिले लागू अदरवाइज इट वाज सर्टेनली इंप्रूवमेंट कि तमरा सेंटर और स्टेट रो पावर को से माने गोटे गोटे कोन कोन तो कंपार्टमेंट कर देथिले एटा सेंटर रो एटा सब्जेक्ट सेंटर एटा करिवो एटा प्रोविंसेस सब्जेक्ट प्रोविंसेस एया करिवो right so that was a good thing first time gote provinces ko power diya gala provinces ko first time gote properly clearly well defined government ki tamara center re काम करियो provinces काम करियो gote आसी गला right
system of diarchy was introduced at the provincial level, right? Eita tankar gote negative thila, right? Though they provided more powers to the provinces, they clearly defined ki tomara center kon subjects ko handle karibo, provinces kon handle karibo, and more power was given to the provinces, but that power was diluted by using diarchy. हम देखिबा डिटेल रे diarchy kon thila, right? It provided minimum of 3 out of 8 members of the Governor General Executive Council shall be Indian, right? So already expansion chalitila, we have seen tamar 1909 re expansion karthile, 80 re expansion kale, so they were increasing the representation of the Indians in the Governor General Executive Council. So it is, but then 3 out of 8 members were now Indians. For the first time, direct elections were introduced, right? Okay, so first time tomar direct franchise, direct election that it introduced heitila, right? So like paravarti hum dekhe 1935 re again the franchise was increased to 10%, right? So it first time introduced heitila. And our Office of Indian High Commissioner was created in London, right? जो ଆମର अच्छा ତମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ବୋଧେ ଆମର ହାଇ କମିଶନର ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଲାଇକ ଆମ୍ବାସେଡର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ? ଦୁଇଟା ଅଫିସ ଆମେ କହୁଛୁ ହାଇ କମିଶନର ଅଫିସ सर जोडी ब्रिटिश माने राज करते सेटा हाई कमिश्नर जोडी ब्रिटिश नते सेटा एम्बेसडर. ओके वेरी गुड राइट. एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला ଗୋଟେ यूपीएससी इंटरव्यू रे देखिছো जे क्वेश्चन टा रैंक 9 ना कोन पचारथिले, राइट? तो जोडा तम कॉमनवेल्थ कंट्रीज हेगला ब्रिटिश रो सेटे, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जे तमरो लाइक हाई ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर थाए, राइट? ओके, तो एटा तमरो ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर एटा फर्स्ट टाइम एटा क्रिएट हेतिला. ओके, हेलो सर. हेलो. हां 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 तो 4 नंबर पॉइंट जो आपण लिखिसंती 3 ऑफ आउट ऑफ 6 मेंबर जोडा वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इंडियन अछंती सेटा 8 ना 6 एक्चुअली टी कंफ्यूज. 3 आउट ऑफ 8 तो मैं लिखी छी, नॉट वेरी श्योर. सर सेटा 6 थिला बदे सर. 3 आउट ऑफ 6 थिला ये आज्ञा आज्ञा टे चेक कर दो ना, गूगल कर दियो, थोड़ा चेक कर दियो तो मते लाइक कोई दो तो एनीबॉडी चेक कि चेक कर दियो कि 6 लगे 8 तक चेक कर दिया, ठीक है ना? 6 थिला. सॉरी सर से एक्चुअली कलिंगा आईएएस बुक टारे सेडी 6 थिला तो मु से 6 भाबु. ओके, चेक कर दो, अरे आप और के देखिए कंफर्म कर दो, राइट? आज्ञा. ओके, देन provided the establishment of public service commission, एटा हम डिस्कस करथिले, राइट? सो 6 थिला, सी राइट? एबे 6 के 8 जगह अछि रखिता. आफ्टर द क्लास थरे देखिया तम तो बोजन 8 लेक्चर बोजन 6 लेक्चर गूगल करिक देखिरी हमें करेक्ट इटा देखितबा, राइट? बट तमे देखिबो. अच्छा, आउट खाली हमें पॉइंट छाड़ देले सेपरेट इलेक्टोरेट सेटा छाड़ देले, राइट? सेटा एडी लिखा है. तो सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू द Anglo Indians, Christians and Sikh, right? 1909 में तमरा Muslims को दिया जाइतला. Now the separate electorate was like enlarged. It was given to Sikhs, Anglo Indians and तमरा Europeans. चला close the door. ठीक है जी. अच्छा, आउ कोन हमें डिस्कस करथिले पॉइंट एट मिसिंग अछि? एनीथिंग? तो डायरकी हे गला, जस्ट आउ थोड़ा देखि दबा. Bicameral legislature at the center हे गला. Then तमरा central list and provincial list हे गला. Diarchy हे गला at the provinces. Expansion of the Governor General's Executive Council हे गला. Direct elections हे गला. स्टेट पब्लिक सर्विस एटा भी अछि एंड डिस्कस करते. Establishment of public service commission हे गला and Indian High Commissioner हे गला. सर आर गोटे थिला ना जोटा ग्रांट फ्रैंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल फॉर लाइक जो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन. That is this point, right? Direct elections जोड़ा, right? सर प्रोविंशियल बजट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हेतला. फर्स्ट टाइम तमरा प्रोविंशियल बजट इंट्रोड्यूस हेता, राइट? तांको से हम कोस तांको एई पार्टटर टिके एक्सपेंशन हम जो कहूछु सेंटर फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस को से माने गुडे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट चेष्टा करथिले. तो फर्स्ट टाइम पे बजट इंट्रोड्यूस हेतला. Our somebody was telling that
they were like allowed to vote in the budget, right? 25% of the budget is voting allowed thila, right? So yes, so these are the major points. Hala, ଆଉ ଯଦି କିଛି point ଅଛି ତମେ add କରିଦବ, like if I have missed anything you can tell me. Major ଆମେ I think ସବୁଗୁଡାକ ଆମେ discuss କରିଛେ, right? Sir, separate separate Sir, Indian women ମାନଙ୍କୁ ବି ଥିଲା କି vote ପାଇଁ ଏଠାରେ? Indian women also right to vote. right to vote Indian electoral Indian women women ମାନଙ୍କୁ ତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା I think 1920 ବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଧେ। ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦବ, ଥରେ ଗୁଗଲ କରିଦବ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି। mention Sir, ନାହିଁ। ସେଟା 1935 ରେ women ମାନଙ୍କୁ 1935 ଦିଆ ହେଇଥିଲା କି? Sir 1919 ରେ ଅଛି actually, ମୁଁ ଏବେ ପଢୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ women notes can ଟା ଅଛି। also vote vote ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ women ମାନେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ ସରି, 1919 ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଓକେ, ତାହେଲେ 1919 ଆମେ ନେଇଯିବା, ତ ସେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଆଡ୍ କରିଦବ। ସୋ ଆଉ କଣ ସେତିକି? ଆଉ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଯୋଉ ବଜେଟ ରେ they can discuss, right? They can discuss in the ତମର budget as well. 25% of the budget they can vote, right? Discussion ତ କରୁଥିଲେ ତମର already ଥିଲା, now they can vote as well, right? So these were like all the provisions, but आर ସବୁଠୁ ଯୋଉ problematic feature ଥିଲା ମାନେ highlighting ଥିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ Government of India Act 1919 ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, the first thing that comes to our mind is diarchy, right? Now let's discuss in detail what was diarchy, ତାର କଣ advantage ଥିଲା, ତାର କଣ disadvantage ଥିଲା, ଆମେ ଦିଟା perspective ପଢିବା। दो क्वेश्चंस रे एटे क्वेश्चन रे तुमको डायरेक्टली पचाची could it satisfy, right? तो हम नेगेटिव क्रिटिकली लेवल लिखिबा, but let's see the both the sides हैला। सिस्टम ऑफ डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कौन? सो डायरेक्टली रे तमरो जो सब्जेक्ट्स अछि प्रोविंसेस रे जो थिला प्रोविंशियल लिस्ट रे, इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, गोटेला रिजर्व लिस्ट, गोटेला ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट तमरो गवर्नर का कंट्रोल थिबो, माने ब्रिटिश कंट्रोल थिबो इन शॉर्ट। ट्रांसपोर्ट लिस्ट हमर इंडियन जो मिनिस्ट्रीज माने अछंदी, जो इलेक्ट होके आछंदी, से मिनिस्टर्स मानकर कंट्रोल थिबो, राइट? तो समथिंग इन रिजर्व लिस्ट माने एटा तमरो इंडियन मिनिस्टर्स माने इलेक्ट हिचंदी लोक माने को थ्रू जो माने मैंडेट पे के आछंदी, दे कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट्स, दे कैन ओनली लेजिस्लेट ऑन द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। तो ये फर्स्ट जिनस हम जानो कि एमि डिवीजन थिला सब्जेक्ट रे। नेक्स्ट कोन कहउछोनी, द सब्जेक्ट्स हैविंग ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफिकेंस, हला जो टिक बेसी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स थिला, लाइक पुलिस हे गला, तमरो लैंड रेवेन्यू हे गला, बजट हे गला, प्रिजन्स हे गला, एजुकेशन हे गला, राइट? एगुडा सब तमरो रखि देले रिजर्व कैटेगरी रे। माने जति कि तमरो रेवेन्यू जनरेटिंग वाला हे गला, जति कि इंपोर्टेंट रिसोर्सेस वाला हे गला, सेगडा सब रखि देले तमरो रिजर्व कैटेगरी रे, हला। आ ट्रांसफर कैटेगरी कोन रखले, जति कि तमरो सब डिपेंडेंट वाला हे गला। देखो बर्तमान तमरो लाइक इरिगेशन, सपोज इट इज इन रिजर्व कैटेगरी, बट तमरो एग्रीकल्चर थिबो तमरो इन योर ट्रांसफर कैटेगरी, राइट? तमरो पुलिस थिबो एठे, लॉ एंड ऑर्डर थिबो एठे, राइट? तो दिस वाज समथिंग माने you are giving them माने what, you are giving them some responsibility but you are not giving them powers, right? तो एटा भारी प्रॉब्लम थिला। नाउ दिस टू लिस्ट हम देखछन केजरीवाल किन कांदे धरि तमरो सबले कुए पुलिस मो हातर नै, पुलिस मो हातर नै, मु कोन करबी, मु को पुलिस तो मो कंट्रोल नै, मो कंट्रोल नै। तो से वाला सिचुएशन नाउ तम देखिबो द ऑल द इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स दे आर अंडर द ना गवर्नर को हातर अछि, हैला। मिनिस्टर हातर जो रिस्पांसिबिलिटी देई छंती कि तमरो जो कंपैरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट, राइट? जो तम रेवेन्यू मिलनी किसी इंपोर्टेंस नै ताकु देई छंती। हेल्थ हे गला, सैनिटेशन हे गला, राइट? तो एग्रीकल्चर हे गला, एजुकेशन ऑफ इंडियंस हे गला, तो एगुडा सो रहिला। नाउ दिस थिंग्स तमर एटा के प्रॉब्लमेटिक बिकॉज़ here the resources are still in the hands of the British, ताका कंट्रोल अछि। पुलिस हे गला कि तमरो इरिगेशन हे गला, एजुकेशन तमरो ऑफ द एंग्लो इंडियंस हे गला, बजट हे गला, लैंड रेवेन्यू हे गला। तो ऑल द रेवेन्यू जनरेटिंग वाला की इंपोर्टेंट सब्जेक्ट्स उडा तमर ब्रिटिश खातर हे गला। आ जो अनइम्पोर्टेंट और लेस इंपोर्टेंट दे विल बी अंडर द योर ट्रांसफर कैटेगरी। तो এই जो सब्जेक्ट्स हे गला जोडा कि रिजर्व कैटेगरी अछि, एटा की करबो, गवर्नर करबो विथ द हेल्प ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल,
राइट जो प्रोविंसेस रे जो गवर्नर थिबे राइट दिस इज नॉट द गवर्नर जनरल नॉट द सेंटर वाला ठीक अछि ये प्रोविंसेस रे जो गवर्नर थिबे सेही गवर्नर ताकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल हेल्प रे एई सब सब्जेक्ट लेजिस्लेट करिवे हैला आ जोडा लेस तमर ट्रांसपोर्ट कैटेगरी जो लेस इंपोर्टेंट सब्जेक्ट अछि ताकू लेजिस्लेट की करिवे ताकू लेजिस्लेट करिवे तमरा द मिनिस्टर्स ठीक अछि सो गवर्नर विथ द हेल्प ऑफ द जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हंदी समाने करिवे अच्छा तो डायरेक्टली इन inherently hela eta disadvantage right because always you are dependent on somebody right तो british पे dependent होचो for resources and all for running smoothly जिनसा तमे तांको ऊपर dependent होचो ताकर बिना coordination तमे करि परिबो नाही पर तार किछि किछि merits भी अछि त merits नाम देखिबा merits कोन it introduced parliamentary form of government for the first time राइट तो किमिति हमर जो हमर इंडिया रे पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किमिति काम करे तो फर्स्ट टाइम इटे गोटे इंट्रोड्यूस हेतिला इटे ओके फर्स्ट टाइम तमर इंडियंस माने ग्रेटर इंडियंस माने एसोसिएट हेले लाइक फर्स्ट टाइम तमर गवर्नेंस रे राइट तो आ पूर्वरु कोन थिले तो दे वर एसोसिएटेड किछि सिंधी काम इंपोर्टेंट रोल नथिला एई देखो फर्स्ट टाइम ताको दे इलेक्ट के आथिले मिनिस्टर्स माने आसीबे राइट so they will legislate on some of the subjects though not very important but at least they will be involved in the governance that is important first time तांको right दिया हला कि they will be involved in the governance right तो कहया गले it allowed the Indians to gain ministerial experience right जोटा कि परे ताको हेल्पफुल हबो जेतबेले से 1937 रे तमरो provincial ministries form करथिबे किबा इंडिया इंडिपेंडेंस हला परे तो से माने टेक केयर करिवे गवर्नमेंट रो इट वाज वेरी हेल्पफुल right so at least it gave them a first kind of experience ki taku they tanda ki how to like run the governance right ko bole tama सब manage karibo so though no it was the subjects were not very significant but we can say safely ki the first time gote parliamentary type of government gote form heitila au indians manaku they were involved in the governance they were allowed to legislate in some of the subjects and yes and it laid the foundation for the provincial autonomy in future yes तमे एटे provinces को first time पे तुम province रो अलगा subject और state रो अलगा subject कर देला दो तुम direct introduce कर देला but future रे it laid the foundation for the provincial autonomy 1935 हम देखिबा तुम direct इटा हटे देले because it was not fruitful it was probably obstructing the provinces in acting independently जोटा कि तांको एया आशा रे दिया जाइतला कि provinces मानकु independence दिया जिवो but it provided them partial responsibility it was not a complete responsibility तांको दिया नथला तो नेक्स्ट तांको पूरा इंडिपेंडेंस दिया गला 1935 गवर्नमेंट एक्ट रे राइट तो डायरेक्टली हमें कहि परिया ए दीरा इंपोर्टेंट पॉइंट मेरिट्स हमें मन रखे डायरेक्टली रो गोटे हला तांको काइंड ऑफ गोटे प्लेटफॉर्म मिलला जोडे से माने काम करले राइट माने गवर्नेंस इन्वॉल्व हेले लेजिस्लेशन करिवार इन्वॉल्व हेले फर्स्ट टाइम तांको प्लेटफॉर्म मिलिथिला राइट नेक्स्ट जिंस हमें कहबा तांकर कोन कहउतली नेक्स्ट जिंसटा हां ताले इन दिस जो हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो हमें फर्स्ट टाइम पे प्रोवाइड करथिले एटा फाउंडेशन लेड कला फ्यूचर रे जोटा कि हम 1935 रे अगेन प्रॉपर पूरा डायरेक्टली रिमूव करा है कि प्रॉपर हमको प्रोविंशियल हमें ऑटोनॉमी प्रोवाइड करथिले राइट तो ए जिंस हम दीटा जिंस हमें कहबा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गोटे हे गला आ गोटे हमरा डायरेक्टली जो एमानको गवर्नेंस से इन्वॉल्व करेला इंडियंस मानको राइट वर्तमान आज हम इंपोर्टेंट पार्ट डिमेरिट्स कोन द प्रॉब्लम कोन all the significant matters were kept in the reserved category only less significant matters were handed to the Indian ministers yes it was first insert जति सब important जिंस हम सेमन दे दोचा आमनको अनइम्पोर्टेंट उडा दोचा लाइक तमरो पुलिस हे गला तमरो रेवेन्यू हे गला राइट इरिगेशन हे गला so all the important जोडा रेवेन्यू जनरेशन in like critical subjects ताको दे दोचा less important sanitation हे गला राइट some of these agriculture health हे गला एटा सब हम दे दोचा राइट the division of the subjects in the reserved and transport categories was unscientific and irrational काहे irrational हम कहिली इरिगेशन तमे दोचो रिजर्व लिस्ट रे बट तमरा एग्रीकल्चर रखछो तमे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट रे अरे इरिगेशन न थाके एग्रीकल्चर किमे डेवलप करेबो जणे यार तमे आमक दोचो एग्रीकल्चर तमे डेवलप करो एग्रीकल्चर
चला माने बुझो से कथा देखला इरिगेशन पे तम पाखरे राइट अछि दिस इज नॉट रेशनल राइट तो एई प्रकार सो जिंस तम लॉ एंड ऑर्डर हमु कोच पुलिस तुम रखछ सेइटे राइट तो एई जिंस रे तमरो जो कहले कोऑर्डिनेशन दरकार लाइक ऑलवेज यू आर डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश right so that was a problem that you need coordination you need support from them all the income yielding subjects were placed in reserve category right and only the expenditure oriented that was a transport category there was no proper division of resources yes from coil agriculture irrigation side agriculture side right तम जोटा तमरो जति लैंड रेवेन्यू सहित रखिछ जोटा जति इनकम ओरिएंटेड जिंस जति सब प्रॉफिट मेकिंग सब सहित रख दिछ जति खर्च बाच करे छै हेल्थ रे खर्च करे छै तमरो एजुकेशन रे खर्च करे छै तमरो लाइक लॉ एंड ऑर्डर करे छै एग्रीकल्चर खर्च करे छै सब एट रख दिछ बाकी जहा इंपोर्टेंट रिसोर्सेस वाला जिंस तम सब हाई इनकम जोड़ा जिंस सब सहित रख दिछ दिस वाज वेरी इरेशनल राइट the civil servants were kept under the control of executive council because of which they didn't take the instructions of minister seriously yes so these civil servants thile so now they were under the control of the governor the governor ko executive council pai responsible thile tanka control rothile ankara kichi control nai jindi Arvind Kejriwal kochi police mane mo katha sunna similar story right it is the bureaucrats mane so control rohile governor general kar tamara governor kar executive council under de they will not listen to the provincial ministers so tanka orders neman nebeni right the system of collective responsibility of ministers was absent right so the ministers were individually responsible to governor and legislative council any minister could be removed by governor anytime without attaching any cause right so amara ebe jimti achi system of collective responsibility right that was absent so Bartaman, they are individually responsible to the governor legislative council. Ajogu separately because they are responsible, tanka against action nahi tanko remove kar paribe. Governor can remove the ministers anytime. So this will stop them from acting independently. Today, without fear and all, someone act kar paribe. They are individually responsible to somebody, right? Tankara jo tenure, tankara chakri kete din karibe and all, if that is dependent, that is in the hands of someone. They cannot work independent, they cannot work without any fear and all right so pressure rahibe so this was another problem ki they were individually responsible to the governor the suspicion and distrust between the two branches of government was another important limitation the members of the executive council did not trust the ministers they tried to keep all the powers in their hands because of which they could not function smoothly okay so even these are branch coordination nathila distrust thila right so these were all different factors amare question no answer so ethre hi achi right to ame jodi phone dekhi daba to काफी से discuss kale merits हम लिखिया दरकार नै हम critically ताको analyze करिबा माने हमरा first part रे कोन लिखिबा what is it the salient features of the government of India act of 1919 salient features रे हमें खाली दी लाइन का introduction लिखतबा कि इंट्रोड्यूस हेतिला तमरो 19 इंट्रोड्यूस हेतिला भाई तमरो लॉर्ड मोंटेगो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंट्रोड्यूस हेतिला आ आरो बैकग्राउंड कोन थिला आरो तो बैकग्राउंड आरथिला तमरो जो वर्ल्ड वॉर 1 चलथिला एंड द होम रूल मूवमेंट चलथिला ता प्रेशर आसीग्री इट वाज अ स्टेप फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड तम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट दोबारा ओके एंड देन तार प्रोविजंस हम डिस्कस करले तमरो बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर हे गेला तमरो डायरकी हे गेला इन द प्रोविंसेस तमरो डीटा लिस्ट हे गेला responsible गोटे provincial list and the central list separate budget for provinces हे गेला तमरो expansion of the governor general executive council हे गेला 3 out of 8 or 6 तमे देखि दाओ थारे right and बर्तमान even budget रे भी से माने vote कर परिबे in 25% of the budget they can vote first time direct election आसी गला women मानको voting rights मिल गला first time right office of the Indian high commissioner create हे गला time and तमरो public service commission आसी गला right separate electorate दिया गला तमरो तमरो women को Anglo Indians को and Europeans को and Sikhs को दिया गला
right? And ଏଇଠି ତମର ହେଲା the cost of the India House Secretary of the State shall be paid by the British government, right? ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆ ରୁ ସେମାନେ ନଉଥିଲେ the cost salaries and all for the 14 member जो Secretary of State ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଥିଲା Indian Council କହିକିରି ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବିୟର କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଏଟା abolish ବି ହେଇଗଲା, Secretary of State ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ ଆଉ ତାର ଅଫିସ ଟା, right? So these were all the ଆମେ provisions ଲେଖିବା। ଡାୟାରକି ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିଛି would it satisfy? No way, right? ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଆମେ provinces gradual ଆମେ ତମକୁ ଦବୁ like the transfer power transfer କରିବୁ, responsible government ଦବୁ। Now there was a attempt of giving ତମର provincial independence, provinces ମାନଙ୍କୁ responsible government ଦବାର attempt ହେଇଥିଲା, but it failed at it, right? ତମର ଯେହେତୁ ଆମେ first ଲେଖିବା କି ଗୋଟେ attempt କରିଥିଲେ, did it satisfy? No, it didn't satisfy, because certainly it was not a responsible government. A complete responsible government could not be given to the provinces, right? Though there was responsibilities was given, but ଆମେ ତାପରେ ତାର ନେଗେଟିଭ ରେ ପଳେଇ ଆସିବା କି ତମର ଡାୟାରକି ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ଡାୟାରକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଟା ତମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହବାରେ ହେଲ୍ପ କଲା ନାହିଁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍? ଆଉ ତା ଯୋଗୁ କାଫି ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ବିକଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ constant we can tell ki constant tomorrow jo fight between the two branches, like between the executive governor general executive council and the ministers, ताको भीतर constant tussle जोगु भल से governance ही पारलानी, right? And then कहीं ही पारलानी हम डायरेक्ट के सब important point लेके दबा कि डायरेक्ट disadvantages कौन डायरेक्ट के first tomorrow तो like all important matters were with the British executive ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ସହିତ ତମର ଅଛି, ରାଇଟ୍? ତ କାହିଁକି ତମର ହଉଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ କହିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଡାୟରକି ବିଷୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆ ଯୋଗୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାୱାର ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦୋଜ ଡିମେରିଟ୍ସ କି ଅଲ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ ହେଲା ତମର ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହୁଛି, ଲେସ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ତମର ରହୁଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସବଜେକ୍ଟରେ, ରାଇଟ୍? ଯେତିକି ତମର division of subjects be irrational, right? गोटे लॉ एंड ऑर्डर राइट रहला बेलू पुलिस आउट जगह रहउची, इरिगेशन गोटे रहला बेलू एग्रीकल्चर अलग जगह रहउची, हाई जदी इनकम यील्डिंग सब्जेक्ट्स अछि सब रहउची रिजर्व्ड रे, एक्सपेंडिचर वाला सब रखुछन ट्रांसफर्ड रे, राइट? तमरा जो पुलिस हेगला कि सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स हेगला, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो तमरा these ministers were individually responsible to the governor, जोटा कि तांकर fearlessly से माने without any what do you call influence काम करिवारे हेल्प करिवनी, जे तमे यदि पर्सनली का रेस्पोंसिबल हेतिबो। तमर कांस्टेंट टसल होला, कांस्टेंट डिस्ट्रस्ट रहला बिटवीन दिस टू ब्रांचेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जा जो गुडे स्मूथली गवर्नेंस हे परलेनी, राइट? तो ए जिंस हमें करिकरी एंड कर दबा एटा। तो सर कंक्लूजन टा केमति लिखिबो? देखो कंक्लूजन कौन बोला, सॉरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो हम जदी कंक्लूजन लिखबा 1919 रो, देखो डायरेक्टली तो हम सेबळे एंड कर दबो डायरेक्टली पार्ट रो। इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो लिखुचो आरो ताले तमे लाइक यू कैन एंड विथ द डायरेक्टली वाला नोट रही कि दो एटा गोटे इंपोर्टेंट स्टेप थिला इन प्रोवाइडिंग हमको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट टू द इंडियंस, जोटा कि हमको शॉर्ट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट गोटे हाफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडेड टू द प्रोविंसेस, राइट? बट जो इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्टली जोटा थिला, इट डाइल्यूटेड द लाइक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड दो तमन इंट्रोडक्शन डायरेक्टली डाइल्यूटेड इट, राइट? तो आ कोन लिख परिबो, तो ये गोटे सिंगल लाइन लिखि दबो एटा हैला। सर ये पॉइंट भी ऐड करियो हो ना, जोटा प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थिले, तो दे आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू लाइक फॉर मिलिटरी, दे आर गिविंग मोर इंपोर्टेंस टू पंजाब, एंड फॉर इकोनॉमिक like for economical benefit they are giving more important Bombay provinces, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थिले। हां प्रोविंशियल देखि वर्तमान बेस क्रिटिसाइज करिया, हमें तो डायरेक्ट को क्रिटिसाइज करछु, मोस्टली विल क्रिटिसाइज द
नहीं सर executive डायर की रे सर जो माने से अपॉइंट करथिले जो मिनिस्टर्स तांका हाँ, तो किसी पावर नथला बट से माने तो ब्रिटिश बोलो इंफॉर्मेशन नि काम करथिले तो correct. आपण ब्रिटिश मिनिस्टर जो आकर आर्मी भी देखिए मैक्सिमम पंजाब रो रिक्रूट होथिले देन आपण इकोनॉमिकल बेनिफिट देखिए सेटा मैक्सिमम बॉम्बे प्रोविंसेस को दोथिले Okay, okay, तो एटा भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है गोटे मु एटा मोर नो okay, okay. ठीक है, ठीक है. So add कर परियो. Sir, Constitution of India has borrowed many features from it. सेमती किसी लिखी होबो कि ଏଇଟା Constitution ନା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଅଫ 1935 ଟା ଆ ଥ୍ରୁ 1919 ରୁ ବି ତ borrowed ହେଇଛି ବହୁତ. many features ଆମେ କହିବାନି 1935 ଟା ଆମେ କହିପାରିବା ହଁ ବହୁତ important because ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ it was very ମାନେ ହ୍ୟୁମଙ୍ଗସ୍ ବଡ ଥିଲା ତ ଆମର ପୁରା ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କପି ପେଷ୍ଟ ସେଇଠୁ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ସର୍ଟ ଟାଇମରେ ଆମର ହେଇପାରିଥିଲା ପସିବଲ 1919 ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବାନି ଦେଖ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କଣ କରିବ କହିଲ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ତମେ ଲେଖିଦବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ এটা তো আকু আমি ক্রিটিসাইজ করছো যদি ইন্ডিয়া वाला কিছু লেখুথিব ইফ ইউ আর রাইটিং अबाउट এনি ইন্ডিয়া মুভমেন্ট লাইক সাপোজ নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট লেখুছো কি স্বদেশী মুভমেন্ট লেখুছো ওয়ান লাইনে তার ডিসঅ্যাডভান্টেজ লিখিও ফার্স্ট কনক্লুজনটা আমি কই দઉં ট্রিক স্বদেশী মুভমেন্টটা কোন তুমি লিখিব কি দো এটা তার ইমিডিয়েট जोड़ा हमर लॉन्च हेतिला कि जोड़ा हमर पार्टीशन ऑफ बेंगल को अगेंस्ट ये रे लॉन्च हेतिला इमिडिएटली सो सक्सेसफुल नथिला तो पार्टीशन ऑफ बेंगल को एनल करिवारे कि ये ताकू लाइक एबलिश करिवारे बट सर्टेनली गोटे फर्स्ट मास मूवमेंट थिला जोटे कि तमरो गोटे नुवा ओरिएंटेशन गोटे नुवा एनर्जी मिलिथिला नुवा यंगस्टर्स माने सब पळे कांग्रेस से जॉइन करथिले तो नुवा एनर्जी गोटे मिलिथिला and it laid the foundation and the methods used in this like the passive resistance and all it was later used by the Gandhian during Gandhian politics and finally which like ultimately helped us achieving independence in 1947 तो गोटे लाइन नेगेटिव लिखुछु कि अचीव कर परलानी थैंक्स एंड ताकू तापरे कहूछु ना यार इंपोर्टेंस है कि परे हेल्प कला एनीथिंग लाइक सपोज मु नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लिखुची नॉन कोऑपरेशन लिखिबी फर्स्ट लाइन लिखिबी तार इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज रे से हेल्प माने पाइलानी इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कोन थिला गांधी जी करो कि हमें स्वराज दरकार हम ब्रिटिश मानको हमको इंडिपेंडेंस मिली जीवो वर्ष भीतर मिली जीवो गांधी जी कहिथिले राइट तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव तो पास कर नथिला से स्वराज रो बट सर्टेनली गोटे नुआ एनर्जी गोटे नुआ ओरिएंटेशन मिलिथिला कहीं पूरा पैन इंडिया मूवमेंट थिला सबु सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से जॉइन करथिले ए मास मूवमेंट थिला सबु सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जॉइन करथिले तो future it laid the foundation for the future such movements like tomorrow civil disobedience movement hela ki quit India movement hela by Gandhi ji and finally which gave us independence in 1947 right so any Indian movement को तमे एई भलिया करी वन लाइन नेगेटिव कर दो पॉजिटिव पे लिखि दबो राइट हां एनी आको छाडी एक्स्ट्रा किछि भी ऐड कर परियो बट वन थिंग मु कहि दोची एबे भी बहुत थर कहि छी while writing GS don't think too much ताको बेसी अलंकृत करिया पे चेष्टा करियो नाही जीएस रे इंपोर्टेंट हला तमे किमिति टाइमली सारियो मार्क माय वर्ड्स जीएस रे इट इज मोर इंपोर्टेंट कि तमे टाइमली सारियो डोंट थिंक कि मु कोट लिखि देबी इंप्रेसिव हे जिवो ये हबो नहीं हे जिवो इंप्रेसिव बट तमे भाबियो जो मन पकेबो कोट लिखिबो ये करिवो ताको अलंकृत कला वाला को अलगा इंस तमरो कलंकृत हे जिवो राइट तो हमकु सेति में इक्वली समझ एवरेज पे लिखिरा अछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स छाडिबानी ऑनलाइन करिवा एंड किमिति टाइमले सारिवा हला तो हमें को जिंस बेसी भाबिबानी दैट इज द थिंग सत कथा माने बेसी भाबिले प्रॉब्लम इफ यू नो समथिंग कम्स टू योर माइंड इमीडिएटली राइट इट नो प्रॉब्लम तमदे एवडा कोट कोच तो माइंड रे आसुची थैंक्स लिखि दियो बट डोंट स्पेंड टाइम भाबी कि से कोटा दे मन पड़नी तमे ये करनी हला तो लाइक तमो जेडा कहली एबे नाउ कमिंग टू एनी ब्रिटिश एक्ट किछि ब्रिटिश एक्ट रो कहबा उल्टा करिवा हला तो ब्रिटिश एक्ट हमें कहबानी कि नेगेटिव कहि कि पॉजिटिव कहि कहबानी ता एंटा नेगेटिव ही करिवा जदि हमें 1919 कहबा हमें कहबा कि दो इट वाज तमरो गोटे कंक्लूजन कला बेले कि एटा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट थिला जोटा कि मोर एंड मोर इंडियंस मानको मोर तमरो लाइक वोटिंग इन्वॉल्वमेंट माने तमरो साइज ऑफ द लेजिस्लेचर बढ़ा हला एंड मोर इंडियंस वर इन्वॉल्वड इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट जो ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थिला तो तम जोटा कि हमरो द इंट्रोड्यूस्ड डायर की इट सोड द फाउंडेशन फॉर द कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड व्हिच रिजल्टेड इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया बुझियला
ब्रिटिश उल्टा करी तो ब्रिटिश विषय एक्ट विषय लिखुची वो फर्स्ट तार पॉजिटिव कहूची तापर नेगेटिव कर दूची एंड टा मोर नेगेटिव रहउची नोट टा तो इंडिया जिन सब कहूची मूवमेंट विषय कहूची मैं उल्टा करची फर्स्ट ता गोटे लाइन क्रिटिसाइज करची गोटे लाइन की ता इमीडिएट ऑब्जेक्टिव रे सक्सेसफुल हैला नाही किंतु तापर ताको संगे संगे लिपापोती को पॉजिटिव कह दूची कहूची नहीं बहुत ठीक अच्छी हैला नहीं किंतु कोई बात नहीं से भलो इनशाला बॉयज प्लेड वेल राइट से बडे हम किछि करी गोटे एंड रे एंड कर दोछु हैला किंतु ब्रिटिश लेखला बेले उल्टा करछु ब्रिटिश लेखला बेले तो फर्स्ट तार हमें पॉजिटिव कहछु ठीक है हां एटा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट थिला कि माने प्रोविंशियल माने डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन राइट 1909 जदि हम कहबी कि साइज ऑफ द लेजिस्लेचर बढ़ा गेला हम मोर एंड मोर इंडियंस इन्वॉल्वड हेले ये सेटा पॉजिटिव थिला किंतु नेगेटिव कोन जो सेपरेट इलेक्टोरेट से माने आने देले एटा तमरो इट शोड द फाउंडेशन ऑफ तमरो कम्युनलिज्म इन इंडिया एंड जोडा कि हमें आज तक भुगतुचु जोडा हमरो हम पार्टीशन करे देला आज तक भुगतुचु हमें राइट 1919 जदि कहबी से कहबी कि एटा गोटे स्टेप थिला ग्रेट स्टेप थिला टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट गोटे तमरो गोटे काइंड ऑफ गोटे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस दो चेष्टा करा जायतिला राइट and more and more Indians were involved in the administration. But the introduction of diarchy in the provinces, it completely dilute कर देती है responsible government को, right? And it made the तुम्हारा जो administration को पूरा administrative machinery को fail कर देती है पूरा, right? 1935 में जो कहीं भी मु conclusion कौन लिखी भी से कोई भी कि first time में तो provincial को autonomy दिया जाती है, right? माने एटा गोटे स्टेप थिला लास्ट तमरो एटा तमरो अटेम्प्ट थिला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रो ब्रिटिश मानो पई राइट आ बहुत एथरे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जायतिला फर्स्ट टाइम पे गोटे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जायतिला सब्जेक्ट्स को डिवाइड करा जायतिला प्रोविंसेस को बहुत पावर दिया जायतिला राइट बट नेगेटिव रे मु कहबी अगेन कि एटा तमको फाइनली एटा तमको किछ जोडा हमर रिक्वायरमेंट थिला कि हमको पूर्ण स्वराज दरकार independence the complete independence dakar it was nowhere near that right it didn't even give us a dominant status though provincial autonomy दिया जायतिला तो जोडा बट हमर जो डिमांड थिला पूर्ण स्वराज रो ताकू किछि दिया जाय नथिला राइट जस्ट किछि गोटे माने गोटे गोटे लेवल अप कर देले कि तुम प्रोविंसेस रे तुम काफी दे देले बट फाइनली जोडा हम डिमांड थिला पूर्ण स्वराज इट वाज नोवेयर नियर दैट राइट तो एई वाला जिंस आमे कंक्लूजन रे इंट्रोडक्शन लिखिबा बेसी भाबिबा नाही आमे को ओके किछि डाउट कंक्लूजन इंट्रोडक्शन विषय रे डाउट मु सेति में कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बेसी एते माने ये करेनी माने एते प्रॉपर्ली हम तो किछि कहनी काई मु भी सिमते प्रिपेयर करेनी कंक्लूजन कोन लिखिबी इट्स टू मच राइट एते इनसे पढिबा हमें ता भीतर सब क्वेश्चन पे सेपरेट गोटे कंक्लूजन इंट्रोडक्शन बनेबा ता माइंड पूरा ब्लॉक हो जियो ओके चलो हम नेक्स्ट how the discuss how the Satyagraha of Gandhi removed the spell of fear among the Indians and thus knocked off an important pillar of imperialism. Hela, just start telling mas gutim dress. Satyagraha कौन कुह like anything that comes to your mind. सत्याग्रह कौन थिला एंड किमिति एटा हेल्प कला हमकु ब्रिटिश को इंपीरियलिज्म को डिफीट करिवारे जरा हमकु फाइनली जो सत्याग्रह मेथड हमकु किमिति इंडिपेंडेंस मिलला right just write whatever it comes to your mind the move conclude we'll discuss that
ओके तो कौन लिखिछ Satyagraha means clinging to the truth. Yes. Non-violence. Yes, non-violence. Truth and non-violence. Yes. Yes. Truth and non-violence. Peaceful protest. Ahimsa Satya Tapasya Satyagraha. Okay. So basically truth, non-violence. ठीक अछि. Okay. Agraha. Insistence. Okay. Hunger strike. ठीक अछि. Hunger strike भी तार थिला ଗୋଟେ method. So basically truth for ରହିବ whatever truth ତା for ରହିବ and you will be the truth ହେଇଗଲା non violence ହେଇଗଲା ତାର base ରହିଲା यार truth ର support ରେ ତମେ stick କରି ରହିବ right even it ତା ଯୋଗୁ ତମକୁ ଯେତେ suffering ସହିବାକୁ ପଡୁ ଯେତେ ତମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡୁ truth କୁ cling କରି ରହିବ right and ତାର ଅଲଗା forms ବି ଥିଲା ଯେମିତି କହିଲ hunger strike ହେଇଗଲା passive resistance ହେଇଗଲା right boycott କରିବା and all passive resistance ଏଟା ସବୁ ତାର different methods. Yes, adoption of non-violence, mass movement, non-violence with truth, weapon of Mahatma Gandhi. Yes, Mahatma Gandhi introduce करथिले. Breaking of law like salt law, sugar law. अच्छा, ठीक ठीक ठीक. Non-violence struggle, non-violence, truth, honesty, and non-violence. ठीक. Mass movement. ठीक ठीक ठीक. Lost by Gandhi ji. आओ कौन? Participation of women, all sections of the people. Yes. Passive resistance, yes. Weapon of the strong who are capable of suffering, yes, yes. Truthful, non-violent, fearless, a technique of resistance. Truth, non-violence, fearless. Boycott, ठीक अछि. Withdrawal of cooperation and boycott, ठीक ठीक. कौन? Gandhiji has once said, "Who is fearless and free of enmity, impartial and aspires for supreme public interest." Once. बी ए सत्याग्रही अच्छा ठीक wait a second yeah. Wait a second. Strong man with non-violence is a brave one. Okay एतिक ना फर्स्ट गांधी जी साउथ अफ्रीका never bow before evil ठीक है opposed to evil not the evil doer what are the consequences ठीक अछि तो आमे like almost बुझिगलेनी नॉन वायलेंस कोन like as तमन सब आंसर देइछ so non तमरो सत्याग्रहटा कोन so basically सत्याग्रह हला तमरो based on two things गोट तो सत्य आग्रह right तमरो ये like you're clinging to truth तम truth जहा ता सपोर्ट रे रहउछो ता साइड हिया होछो whatever the consequences may be you're not bothered you're fearless you're not bothering कि तार consequences कोन and one more thing is non-violence important base la non-violence तमे किछि भी peaceful way protest करिवो right you're clinging to the truth ro side तमे रहउछो so whatever the like consequences might be you're not bothered and the base is non-violence the different forms हमें सत्याग्रह करछु like passive resistance हेगला boycott करिवा right hunger strike हेगला like तमरो women माने involve होचंदी picketing of liquid shops करचंदी right जो ब्रिटिश अगेन इंपोर्ट कमिबो तमरो चरखा जो हेगला ताकू प्रमोट करिवा राइट ए भला रूल्स ब्रेक करिवा राइट तो इडा हला तार बेसिकली काय हमें जे भूल करछि हमें तार भूल है हमें तार लाइक वी आर नॉट अगेंस्ट दैट पर्सन बट वी आर अगेंस्ट द इविल ही इज कमिटिंग राइट हम देखिबो गांधी जी साउथ अफ्रीका करथिले तमरो से माने साउथ अफ्रीका प्रथम कोन गले कि तमरो मैरिज को इलीगल कर देले जो एशियन माने बाहा होचन तांग मैरिज को इलीगल कर देले तो गांधी जी कोन करले से मूवी देखिछ गांधी जी कोन करले तले से माने ये करथिले व्हाट डिड ही डू कोन करले गांधी जी अच्छा आउडे आस्तिला तांको गोटे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धोई बुलिया पडुतला आई थिंक से सीन टा अछि ए सीन टा अछि तमरो मूवी रे
कि रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धरि बुलिया पड़तला राइट सो ओपनली ताकू सी गोटे चैलेंज करले राइट कि आमे नै मानिबुनु से माने कल रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट धरि बुल ये कहले दैट इज रॉन्ग काहे हम रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे बुलिबु तला आमे जनरेशन सला आसी के काम करछु वी आर इक्वली लाइक वी आर इक्वली रेस्पोंसिबल फॉर द डेवलपमेंट हियर तला हमु काहे के ट्रीट करा जिवो व्हाई हमकु एबडा आउटसाइडर बोले हमु सर्टिफिकेट मांगु कि तमे ओटे आईडेंटिटी कार्ड इन कैरी करी बुल ताको से जळेले राइट ओपनली से चैलेंज करले कि ना हम मानिबुनु दिस इज सत्याग्रह काहे हमें ट्रुथ रो पाथ रे अछु राइट हमें लाइक काहे कि हमें मानिबु कि लाइक कार धर के हम बुलिबु राइट बिकॉज़ दैट इज नॉट राइट व्हाई वी आर सपोज टू कैरी ए कार तो से कहला हम कार्ड हमें धरि के बुलिबानी हम ओपनली ताकू दाहा करिबा ओपनली ताकू जळेबा हम बुलिबानी राइट ताकू कहले कि तमे पोल टैक्स दबो तमे जदी गोटे प्रोविंस रो आउट प्रोविंस गलो लाइक सम ट्रांसवाल ना को प्रोविंस थिला पिटोरिया रो ट्रांसवाल को तम जो आसिला सी जबरदस्ती गले लाइक नाटाल रु ट्रांसवाल राइट तो लाइक जबरदस्ती गले सी क्रॉस करले राइट कि नै हम क्रॉस करिवु हम पोल टैक्स दबु ना हम क्रॉस करिवु सो दे वर रेस्ट्रिक्टेड कि तुमको नै तमे एटू माइग्रेट कर परिबनी तो दे डिड दैट राइट जो इनवैलिडेशन ऑफ द मैरिज कले कि तुम यदि बाहाल तो एई सब जिंस तो बेसिकली लाइक स्टार्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका रे फर्स्ट तंग सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट से करथिले इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल राइट सो सत्याग्रह रो स्टेजेस भी अछि तो इनिशियली इट इज पैसिव रेजिस्टेंस नॉन वायलेंस पैसिव रेजिस्टेंस जो हंगर स्ट्राइक करिया पीसफुल मार्चेस करिवा बट स्लोली द सेकंड फेज इज योर non payment of taxes as well even tome like you start with the passive resistance but then slowly you will go for breaking the rules and all till now you are passively resisting tome actively resist kono passively resist korchu din seta to manu na nai mu ye karibi boycott karibi schools jibini then you slowly start ki nai tomara mu even giving your conduct knighthood de thile tomara Rabindranath Tagore right nijor titles fere daba that is good so it is satyagraha different methods right it can start from a like simple tomara ode peaceful hunger strike to aram hai pare it can be a boycotting the schools colleges law court he gala boycotting the foreign cloth he gala picketing of the liquor shops for women he gala right and then tomara kongodli then the breaking of the rules he gala like civil disobedience हम salt law break kale ki जहाँ भी हमें लॉ कोड वो कोड की हमें चाकरी छाड़ले कि लेजिस्लेचर छाड़ले राइट तो यही सब तार डिफरेंट हाँ डिक्लाइनिंग द हम जो कहली कि हमरा जो ब्रिटिश मान जो दउछन तो नाइटहुड एंड ऑल ताकू डिक्लाइन करिवा these are the different methods जोटा गांधी हम साउथ अफ्रीका आरंभ करथिले साउथ अफ्रीका रे वी हैव सीन द एसो एग्जांपल्स लाइक तमरो registration card हे गला against the invalidation of the marriage हे गला against the illegal migration policy हे गला against थिला it was quite successful then he came to India so before actively involving again तीनटा movement थिला तांगर right चंपारण रे करथिले सत्याग्रह इंडिगो से ये पई अहमदाबाद रे करथिले तमरो जो प्लेग बोनस 35% कहिथिले दाबी थिला माने 20% कहउथिले मिल ओनर्स माने ता पे हंगर स्ट्राइक करथिले देन तमरो फाइनली खेड़ा रे तमरो खेड़ा भी तमरो सत्याग्रह तापर करथिले फॉर द तमरो कोन सेटा थिला जो फेमाइन कोड राइट तमरो जो इफ देयर इज अ फेमाइन एंड ऑल ड्रॉट होची तमरो पूरा पुछि जाउची चाष होउनी तापर तुम टैक्स दवा पड़तुला तो तापर आसिला कि तमरो कि हमर जदी 25% टू अधिक तमरो एटलीस्ट तमरो लाइक 75% तमरो यदि चाष प्रोड्यूस खराब हो जाईची देन you are not bound to pay any tax zero tax right so सेटा पास इतला खेड़ा रे तो इंडिया भी इनिशियली से एक्सपेरिमेंट्स देखेले then he has shown this in a bigger scale in non cooperation movement हे गला तो बहुत बड़ा मास मूवमेंट हेतला राइट बहुत all the sections of the people तमने कहिला स्टूडेंट्स हे गले women हे गले right different people they participated then तमरा civil disobedience movement हे गला तो law break करबा and all again it was successful क्विट मूवमेंट हे गला क्विट मूवमेंट दो एते बेसी नथिला सत्याग्रह एंड ऑल बिकॉज़ अरेस्ट हेकरी वायलेंस ही चलतिला बट एटलीस्ट तो फाइनली जोरा मु कहिली हमें वी कैन टॉक अबाउट सत्याग्रह साउथ अफ्रीका रे हम कोइ परिवा कि नहितिला वी कैन टॉक अबाउट द जोटा गांधी जी तले एक्टिव पॉलिटिक्स आसी नथिले द
चंपारण अहमदाबाद खेला विषय कहि परिया then we can talk about satyagraha in तमरा non cooperation movement civil disobedience movement and Quittem movement finally we can say एई जो attitude लोक भितर जो fear हटे देला कि जेल जीवा fear कि हमको torture करिवे fear we have seen तम civil disobedience movement तमरा केमिति जो धर्षण सत्याग्रह हेतिला how they describing कि तमरा गोटे लाइन लीडर्स जाउथिबे माड़ खाई मुंड फाटी पड़ुथिबे सेकंड अनदर लाइन जाई जाउथिबे इट वाज ongoing process गोटे लाइन माड़ खाई पड़ुथिबे नेक्स्ट लाइन आउट जाउथिबे they knew they will be getting beaten जानि बेटा मुंड जानुचंते कि मोते मुंड मारी फटे देबे still जाउचंती because they know कि नहीं what the British are doing is wrong आमे तक प्रोटेस्ट करडा हम अधिकार राइट तो आमे करिया पड़े प्रोटेस्ट तो एई जिंस एटीट्यूड लोक मते जो जेल जीवा डर थिला एंड फाइनली मैनिफेस्टेड इन द क्विटनेस मूवमेंट लीडरलेस हे गला के रहिले नि लीडरशिप किन देखो लोक मानके डर नाही लोक को अरेस्ट डर नाही लक्षे लोक तमरो लाइक अरेस्ट हेले 10,000 लोक तमरो माने सप्रेशन मरा गला स्टिल दे वर नॉट स्केयर्ड से मानी चलतिले राइट इट वाज ऑल आउट मूवमेंट माने इवन लीडर्स मन नथिले मेल लीडर्स मन नथिले स्टिल एते गुटे वायलेंट मूवमेंट हैला लोक भितर सेति की फियरलेस हे येति लोक माने कि नहीं आमे ब्रिटिश अगेंस्ट लड़ीबू आई विल फाइट अगेंस्ट द इविल सो एटा विषय हम टिके देखि दबा रहले इंपोर्टेंट पॉइंट उडा जल्दी जल्दी काफी पॉइंट हम कर दै छै लिखि परिया किछि बड़ ये नहीं ओके I'm कहली सत्याग्रह is a technique developed by Gandhiji to oppose the exploitative policies of the British. It was based on truth and non-violence. I'm already discussed truth and non-violence. Right? Now you stick on the truth side, whatever may be the consequence. Right? It was based on the policy that the evil could be best countered by non-violent resistance. The passive resistance है non-violent resistance है but evil को tackle करिबा that is the best way. तम यदि violence use करिबो तम यदि किछि अलगा वे रे तमे लाइक ताकू अपोज करिवो then easily your protest तमर जो resistance can be like what do you call that can be subdued right मु जदी violently act करिवि जे ब्रिटिश गुली मार देबी ए कर देबी मे बी सेमान आर्मी आनी ठिया करके मते जनरल डायर जेन जलियानवाला बाग रे करतला सेबला किछो कर देबे सप्रेस कर इजीली सप्रेस कर देबे and they will give this reason कि आमे काई को लोए टेररिस्ट गुडाको ए देखो ए माने ए बेला करथले बोले आमे सेति में बाध्य ताको मारलु राइट बट इफ यू आर डूइंग इट इन ए non violent way then if they suppress they are damned if they do not suppress they are damned right suppress करले भी असुविधा न करले भी असुविधा suppress करले we will cry कि अरे हमको मारले लाठी चार्ज करले हम दबेले suppress न करले आमे कहबे आमे जीती गेलु right so anyway आमे ताको प्रेशर पके तो सत्याग्रह इज द बेस्ट वेपन लाइक तमरो आउ को वेपन लाइक ने तो बहुत डिबेट अछि भगत सिंह कोन कर परथाने सुभाष चंद्र बोस कोन कर परथाने बट समवेयर डाउन द लाइन सेही सब जो एग्रेसिव ये रे ना इट वाज दो प्रेशर परथांदा वी डोंट नो व्हाट रिजल्ट कोन हितांदा बट एटा गोटे वे थिला जोथरे कि मे बी तांको yes it will take time but it is the right way to achieve it right might thought maybe एतरा में बेसिक डिस्कस तो करियो नहीं बट हां एटा मतलब जो एटा भलो वे थिला एटा देखो हमरो आज तुम देखो कोठी भी वर्ल्ड रे जाओ गांधी जी को इमेज कितना पॉजिटिव इमेज अछि बट नोबडी नोज भगत सिंह नोबडी प्रोबब्ली एते सुभाष चंद्र बोस को एते अप्रिशिएट करिवे राइट बट गांधी जी को इमेज आज भी एक पॉजिटिव इमेज अछि कि से लाइक हाउ he fought against this British तमरो जो हमरो colonial rule right okay हां तो कोन हम देखथिले आंसरटा देख दवा ठीक सत्याग्रह एटा गांधी जी डेवलप करथिले बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस हेगला देन गांधी जी को एक्सपे साउथ अफ्रीका रे हम लेख कहि दवा कि सिक्किमिदी साउथ अफ्रीका रे एटा तमरो यूज करथिले लाइक ऑल दिस थिंग्स लिटिल बिट हम लिख दवा अगेंस्ट तमरो जो माइग्रेशन पॉलिसी हेगला राइट फ्रॉम नाटाल टू ट्रांसवाल जो माइग्रेट करथिले तांका ऊपर जो पोल टैक्स आस्थिला राइट एंड जो अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हेगला अगेंस्ट द इनवैलिडेशन ऑफ द इंडियन मैरिजेस हेगला एटा किमिति यूज करथिले राइट आ देन
सक्सेसफुली सी आकु ब्रिटिश मानको माने प्रेशराइज करिकरी सी एमानको इंडियन जो मेजर डिमांड मानको राजी करैथिले मेजर डिमांड्स जो सक्सेसफुल इन साउथ अफ्रीका इन इंडिया हम देखिबा चंपारण हे गला खेड़ा हे गला अहमदाबाद एइटे सक्सेसफुल थिला एंड देन आमे कहबा यदि जोटा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रे हे गला कि सीडीएम रे हे गला कि क्विट मूवमेंट रे हे गला इटे को बळे आइडा ब्रिटिश पर प्रेशर पकेला एंड तारा हम टिके डिफरेंट फॉर्म्स भी लिखि दबा कि तमरो हेइतला स्टार्टिंग फ्रॉम तमरो पिकेटिंग हे गला कि तमरो बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस हे गला हमरो यूज ऑफ स्वदेशी हे गला खदी हे गला राइट so all those things we can write then conclusion लिखि दो सत्याग्रह was a noble ideal way used by Gandhi ji. It gave the Indian national movement a moral strength to oppose the British, right? So like as somebody item like Paria, it ensured that the freedom is owned in the right way, right? Might be delayed but it is owned in the right way. तो ये वाला किसी हमें लिखी के एंड को परिया तो 10 मार्क क्वेश्चन थिला तो ठीक अछि ना किछि डाउट एथरे सत्याग्रह क्वेश्चन रे आई थिंक एनफ हमें पाइए जे आर पॉइंट्स right we know all the satyagraha there are different methods जानचे हमें तार definition जान देले तार different methods जान देले किमिति different ways सत्याग्रह किमिति हबो it can be passive resistance it can be hunger strike it can be a boycott of the schools colleges हे गला lockout हे गला जो declining of the titles हे गला reclining of the titles and all so तमरो use of khadi हे गला तमरो use of the swadeshi products हे गला picketing of liquor shops हे गला non payment of taxes हे गला right breaking of the rules हे गला so all these are the different ways जोटा कि हम सत्याग्रह में देखि परछु डेफिनेशन जानचे डिफरेंट वेज जानचे अब इंडिया रे किछि हमें गांधी जी का एक्सपीरियंस डिस्कस कर परिबा साउथ अफ्रीका रे किछि बिफोर जॉइनिंग द मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स किछि आफ्टर मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स 18 टाइम्स राइट so all these are points then हेला तमरो Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose, the ideology of Subhash Chandra Bose was a combination of nationalism, fascism, and communism. Nationalism तो सब जानिଛ, right? निज देशभक्ति. Fascism माने कौन? What is fascism? What is fascism? What is fascism? Autocracy, authoritarian. Authoritarian, right? Very good, very good. So fascism है ना, ଗୋଟେ dictator rule करिवा, right? ଆମର हिटलर हो कि ଆମର मुसोलिनी हो ताकर जो पॉलिसी जो डिक्लेयर ଗୋଟେ डिक्टेटर रूल करिवो इट इज फैसिज्म हम कहिथिले कि तमर कंट्रोल रहइबो विथ द पीपल राइट प्राइवेट पार्टिसिपेशन नै पीपल मन बाय कम्युनिटी लेफ्ट आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एटा हमर जोडा सीपीआई एंड जो सीपीआई अछंती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताको बळे आइडियोलॉजी हमर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी सो बेसी तमर टिके जो पीजेंट को ऊपर बेसी टिके आंकर ये थाए एंड तो लेफ्टिस्ट वाला आइडियोलॉजी थाए बेसिकली राइट अच्छा तो आर जदि हमें देखिबा डाय डिस्कस कर देबी टाइम केते गेलानी डाय डिस्कस कर देबी ना त माने किछ कहय चाहछो अच्छा जल्दी को टिके सांग सांग कह दियो हमें विल 2 मिनट्स जहां कहबे जल्दी को त हम डिस्कस कर दो 2 मिनट्स से कौन जानछो सुभाष चंद्र विषय से कहि चलो जहां जानछो लिख चलो
ओके देखिया कौन लिखा रहा ओके फॉरवर्ड ब्लॉक हाँ से एस्टैब्लिश करतले ही एस्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन yes kind of yes but बेसी तो जवाहरलाल नेहरू को सेठी बेसी सुटेबल ଟିକେ बट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ଥିଲେ ये भी राइट जवाहरलाल नेहरू ଟିକେ बेसी ଟିକେ रूस प्रति ଟିକେ ये ଥିଲେ ताकर एडी बेसी थिला इंडस्ट्रियलाइजेशन yes give me a blood I'll give you freedom yes स्लोगन ଦେଇଥିଲେ ଏଇଭଳିଆ फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश करथिले is man of action आजाद हिंद फौज हाँ आजाद हिंद फौज तमरा आईएनए एस्टैब्लिश करते जर्मनी रे এটা কোন সাম্যবাদ সাম্যবাদ মানে কোন স্পিরিচুয়াল इंटेलेक्चुअल एथिकल एस्थेटिकल ऑफ लाइफ এটা মোপেডি হাইফাই গেলা মু পড়ি পড়নি ছাড় দিও दिल्ली चलो यस स्लोगन दिखले दिल्ली चलो आजाद हिंद फौज यस नेशनल आर्मी डिसलाइक्ड कम्युनिज्म कम्युनिस्ट पार्टी से मिसी थिले से डिसलाइक कोन करथिले सी भी लेफ्टिस्ट थिले और एमएन रॉय वगैरह से मिसी थिले फर्स्ट वीमेन रेजिमेंट रानी लक्ष्मी बाई यस दिल्ली चलो हायर एजुकेशन टेक्निकल साइंटिफिक फील्ड कौन करथिले हायर एजुकेशन आई डोंट नो डिड यू डू एनीथिंग हायर एजुकेशन किछ करथिले मु तो जाननी कौन करथिले हायर एजुकेशन भाई ताको अंडर रे नेक्स्ट हमरो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे से गोटे कमिटी बसैथिले इकोनॉमिक पॉलिसी पे एंड प्लानिंग पे भी कमिटी तांकर गोटे आस्थिला प्लानिंग पे बसैथिले नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे आस्थिला Instrumental in the formation of National Planning Committee of the Congress. नेशनल प्लानिंग कमिटी हे गला गोटे इवन हमरो इकोनॉमिक ये पे भी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पे गोटे 1931 रे सतल भी कराची सेशन में सी किछि गोटे कोन गोटे तांकर अंडर गोटे आस्थिला प्लानिंग कमिटी 1939 ना 1939 ଦେଇଥିଲେ एंड इवन इकोनॉमिक पॉलिसी रे भी सी थिले से कमिटी रे बोले जो जवाहरलाल नेहरू ये करथे से थिले से कमिटी रे ओके आउ कोन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ही नेवर ट्राइड आउ कोन हेला आउ से किछि इंपोर्टेंट देखाउनी यस हरिपुरी एंड त्रिपुरी सेशन में से हमरो प्रेसिडेंट थिले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यस women empowerment yes women empowerment president of youth congress okay CR Das तांकर पॉलिटिकल गुरु थे वेरी गुड नेशनल प्लानिंग कमिटी अब बस इतनी था आगे नहीं बस चलो बंद कर दो हमें ओके तो काफी पॉइंट्स हम डिस्कस करले तो हमें टिके थी इन शॉर्ट हम डिस्कस तांको से करबा लाइक व्हाटएवर यू टोल्ड लाइक ऑल ऑफ दोस पॉइंट ए सीक्वेंस से जीवा जदी हमें देखो सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट देखिबा ही वाज आईसीएस ही वाज सिविल सर्वेंट राइट लाइक से परे से चाकरी छाड़ देथिले तांको पॉलिटिकल गुरु थिले तमरा सीआर दास राइट चित्ररंजन दास जे हमरो स्वराजिस्ट पार्टी वाला से तांकर पॉलिटिकल गुरु थिले एंड he was this Subhash Chandra Bose was a socialist like leftist ideology like socialist थिला ideology एडी जो हमरो जवाहरलाल नेहरू से मिसी करी नेहरू रिपोर्ट रो अपोजिशन रे व्हाट वाज द पार्टी ही फॉर्म नेहरू रिपोर्ट रो अपोजिशन को पार्टी फॉर्म करथिले जल्दी किडे को कोन पार्टी फॉर्म करथिले नेहरू रिपोर्ट रो अपोजिशन रे बिकॉज़ नेहरू रिपोर्ट रे there was no mention about Independence League. Indian Independence League very good right Independence League. very good so basically first तो ICS थिले हम कोई परिया then तमरो चाकरी छाडी करी से
आंको भीतर आंको थ्रू इंस्पायर्ड थिले सीआर दास को तांकर आइडियोलॉजी रे एंड टिके सोशलिस्ट थिले यंग रेडिकल टिके थिले लाइक सोशलिस्ट जवाहरलाल नेहरू ये सोशलिस्ट इवन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रो से मेंबर हम कहि परिबा कांग्रेस माने एटा कांग्रेस छाडी कि नो कांग्रेस भीतर ही पार्टी कांग्रेस भीतर ही तांकर सोशलिस्ट वाला तांकर लिनियस थिला सर किसान सभा फॉर्म करथिले सर हां तमर तापरे कोन कहउली 1929 ने तमर से नेहरू रिपोर्ट रो अपोजिशन में दे सीआर जवाहरलाल नेहरू बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म करथिले राइट एमानगर प्रेशर जोगु कांग्रेस तार लाहौर सेशन रे कंप्लीट इंडिपेंडेंस रो दाबी करथिला राइट एंड तमर 1931 कराची सेशन रे वन ऑफ द थिंग नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आंको मेंबर करा आइथिला कि से नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ता परे ये करिया पे and he was the Congress president in the Haripuri session 1938 and Tripuri session 1939 and in a Tripuri session ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅପଡ଼ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀजी ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମಯ್ୟା କୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏ ହେଲେ तो then he formed तमरा फॉरवर्ड ब्लॉक तो एटा तक इंडिया रे किछ रूल हे गेला माने पार्ट हे गेला तो इफ यू सी मेजर हमरो कोन रहउची इफ यू सी सोशलिस्ट वाला तक लिनियज रहउची तो गुड मन रखियो कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी अगर सोशलिस्ट वाला आइडियोलॉजी अगर ही वाज क्लोज टू योर जवाहरलाल नेहरू हे गेले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला एमएन रॉय हे गेले तो लेफ्ट लिंकेज तक रहउतला एंड डाइहार्ड नेशनलिस्ट थिले क्वेश्चन नेशनलिस्ट पचाची डाइहार्ड नेशनलिस्ट थिले राइट गोटे आईसीएस हेकरी रेजिग्नेशन देके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट रे प्लंज करथिले राइट ही वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल राइट एंड तमसी जिमदी बाय हिज मेथड वाज डिफरेंट बट ही वांटेड इंडिपेंडेंस ही वांटेड टू फाइट ही वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द कॉलोनियल माइंडसेट द कॉलोनियल रूल अगेंस्ट थिले राइट आ सेति में रेडिकल मेथड्स माने एडवोकेट करथिले तांको भगाय पे राइट ही वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ कि हमें आराम से ब्रिटिश को सपोर्ट करिबा एंड ऑल एंड तो ये तो हेला अच्छा सी 1940 रे त हमरा अगस्त ऑफर वगैरह चलथिला वर्ल्ड वॉर 2 चलथिला सेता समस्त कथा होतले कि हमें कांग्रेस सपोर्ट करिबा एंड ऑल ब्रिटिश को ई कोते सपोर्ट करिबा नि हम ओडे बड आ ओडे बड मूवमेंट लॉन्च करिबा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड आको भगे दवा राइट ही वाज एडवोकेटिंग रेडिकल मेथड्स लाइक हमरे लेफ्ट लिंक लिनियज थिला रे आउ कोन देन आजाद हिंद फोर्स वाला तंगर 1942 रे सी जायकरी जर्मनी जायकरी सेटे हिटलर ये रे आजाद हिंद फोर्स गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर इंडिया सेटे फॉर्म करथिले राइट एंड देन अगेन तमर परे मोहन सिंह को थ्रू साउथ ईस्ट एशिया आसीकरी सेटे लाइक तमर आर्मी गोटे बड़ आर्मी फॉर्म करिकरी सिंगापुर फिंगापुर जायकरी तो हम देखले रानी लक्ष्मीबाई हे गला तमर डिफरेंट जो रेजिमेंट सब बनै करी सेटे मोबिलाइज करी करी द जति सब इंडियंस थिले बाहर फॉरेन रे को तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थिले प्लस जते इंडियंस थिले सेटे सब तमरा सिंगापुर मिंगापुर रे सो दे ऑल जॉइंड बड़ा आर्मी फॉर्म करी करी सो हाउ ही लेड द इंडियन नेशनल आर्मी टू इंडिया को इंडिपेंडेंस दिले पे बट इट फेल्ड रिवर्सेस है ना बट देयर हिज कंट्रीब्यूशन वाज देयर एंड तापर ये तापर हम जानने का कौन हला हाउ ताको टास्केंट रे गोटे प्लेन क्रैश रे से मरि गेले बट तापर इट इज इन मिस्ट्रीज वी डोंट नो कौन हितला सो दिस वाज अबाउट हिम एंड तुम देखिबो दी एथरे हम सबुडा पॉइंट एथरे हम तांकर ये देखिबो जहाल क्वेश्चन पचाची नेशनलिस्ट यस ही इज नेशनलिस्ट he fought against the colonial rule though his methods were radical but he was a nationalist right so nationalist thile hi tankar dekhibo di like he was fighting against the British rule tankar contribution you can see like everywhere so CDM re he gala tamara like congress ro jo movements he gala purna swaraj he gala so he was nationalist socialist jodi कहबा कि जो communist के socialist कहू yes तांकर जो लेफ्ट लिनियज देखि दियो जोडा तांगर गोटे तो रेडिकल मेथड्स कहउचंती तांकर जो वर्किंग क्लास पय तांगर इफ यू सी हिज सपोर्ट फॉर द वर्किंग क्लास फॉर द लाइक द मिल वर्कर्स हे गला कि फॉर द
peasants ହେଇଗଲା this shows କି ତାଙ୍କର ଟିକେ common man ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ working class ପ୍ରତି ତାଙ୍କର lineage ଥିଲା right radical methods ଯୋଉ କହୁଥିଲେ and then Nazi ଫାସି ଦେଖିବା ଯଦି he was not in support of ତମର ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ mild democratic politics and all right ସେ ଦେଖିବ ଯଦି he was quite inspired by Hitler and all ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ତମର Hitler Mussolini ବହୁତ inspired ଥିଲେ so he was in favor of a iron hand ରେ ତମେ rule କରିବା right so ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର fascist ideology ଜଣାଉଛି right ତମେ common points ଲେଖିବା ବାକି ବସ end ରେ ଏଇଟା ତମେ conclude କରିପାରିବ କି ହଁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ left lineage ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ socialist like he was fighting against the anti-colonial rule that he was nationalist he believed in a ruling with an iron hand a heavy hand the rule କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ he didn't believe in the mild democratic politics so ତାଙ୍କର ଆମେ fascist ideology ଆମେ କହୁଛେ ତ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ओके ସିଏ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ତମର ମୋତିଲାଲ ନେहरू ରିପୋର୍ଟ କୁ ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ଡୋମିନେନ୍ସ ଷ୍ଟାଟସ କହୁଥିଲା ହି ୱାଣ୍ଟେଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ତମର ଲାହୋର ରେଜୁଲେସନ ପାସ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍ ହି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ ଇନ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅଫ 1930 and ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା he was opposing it and even he opposed signing of the Gandhi Irwin Pact तो compromise କରାହେଇକିରି phase 1 of the civil disobedience movement ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା right ଗାନ୍ଧୀजी ଇରୱିନଙ୍କର ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ବିକଜ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରେସର ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ତମର ସେତେବେଳେ ସୋ ଦେ ୱର ପୁଟିଂ ପ୍ରେସର କି ଆମର ଯୋଉ ମିଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ତାପରେ ବହୁତ ଲସେସ୍ ହଉଛି ତମେ ସିଡିଏମ କୁ ବନ୍ଦ କର ତା ପାଇଁ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଥିଲେ he was closely associated with Jawaharlal Nehru and M.N. Roy ମାନେ କି M.N. Roy ହେଲା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ वाला जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट वाला तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडेंटिटी लेफ्ट लिनियज थिला तांकर सी तमरा हरिपुरी एंड त्रिपुरी इलेक्शन जीतिथिले राइट आप तांकर ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश करथिले आइठे से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टैब्लिश करथिले आफ्टर अपोजिंग द नेहरू रिपोर्ट इंटरनेशनल आर्मी तांकर अलग देखिबो से तमरा 1940 तम जर्मनी जाइतले जर्मनी तमरा आजाद हिंद फोर्स तमरा सेटे गुडे एस्टैब्लिश करथिले पर सेटे कि सक्सेसफुल हेलानी जर्मन रु सपोर्ट पाइलेनी देन ही केम टू तमरा साउथ ईस्ट एशिया सिंगापुर आस्तिले सेटे ऑलरेडी तमरा मोहन सिंह थिले राइट सो मोहन सिंह टू सी ऑलरेडी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को नेकी आर्मी बनैथिले तो ताकरो हैंडओवर नेकी ताकू से आउट ऑर्गेनाइज करिकरी से आउरी सेटे मोबिलाइज करी लोकन को काफी बड़ स्केल रे इंडियंस मान से सब जो थिले जॉइन करथिले राइट एंड then see like he fought against the allied forces right and then the Burma war re hari thile right yes so this is about it kichi doubt eta 10 मार्क क्वेश्चन बेसी ना इंपोर्टेंट पॉइंट्स तांगे लिखे अछि तांगर जो हां तांगर बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को जो कोन कोन प्रकार कोन सॉरी कोन पराक्रम दिवस पराक्रम हाँ हाँ पराक्रम दिवस हमें ये करूँ अच्छा तो एटा किसी डाउट नहीं ना सिंपल तो पॉइंट्स अच्छी नो राइट क्लियर critically analyze the Morley-Minto reforms मतलब को कौन जानी छ ता बैकग्राउंड काहे के लॉन्च हेता को टाइम में लॉन्च हेतला के लॉन्च करथिले ता बैकग्राउंड कोन व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस राइट व्हाटएवर इट कम्स टू योर माइंड टेल me the criticism as well right whatever comes to your mind जल्दी लिखो again the minute
अरे हमारो काफी लेट हो रहे हैं. ओके. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मिलो मोटे रिफॉर्म्स देखुचे. तो तमरो जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स हे गला. सो एटा तमरो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय मिंटो हे गले एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉरले हे गले 1909 ने इंट्रोड्यूस करायैतिला. आ बैकग्राउंड देखिबा दी काहे इंट्रोड्यूस करायैतिला ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. पार्टीशन ऑफ बेंगल स्वदेशी मूवमेंट चलथिला. तार प्रेशर आसिक माने एटा इंट्रोड्यूस करथिले. तार फर्स्ट जिनस देखिबा दी now the size of the legislature was increased. The additional members in the legislative council was increased from 16 to 60. Right? Even provinces रे भी हे गला and center रे भी हे गले. Different जगह रे तमरा all the places provincial legislature हो कि center रे हो central legislature, the size of the member it was increased to include more and more Indians. The system of indirect elections was continued. Right? Direct election एबे start नतला एबे भी still it was indirect election जोड़ा nominate करिवे तमरो and all. The members of the legislative council को power दिया गला कौन से माने वर्तमान क्वेश्चंस पचारि परिबे सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस बजट डिस्कस कर परिबे additional grants of local self governing bodies पे मागी परिबे. Now they were given more powers in discussing the budget जोड़ा पूर्व नथिला. Right? So now they can discuss about the budget. ये काहे एते खर्च होची ये काहे कम खर्च होची एग्रीकल्चर काहे खर्च होनी एते काहे बेसी खर्च होची. So they can discuss the budget, they can ask questions and supplementary questions, right? And they can request grant for their local self government. Powers pretty increase the act provided for appointment of Indians in the executive council, governor general executive council, and the council of secretary of state for India. हमारा जो SP सिन्हा है गले, he was the first Indian to be member of the governor executive council. See, law member थे, right? He was a law member. The governor general executive council ने first time Indian को include कराया था. The first ला हमारा SP सिन्हा था हमारा जो first Indian थे तो law member हमें introduce कराया था. And even secretary of state council ने भी तो 14 member council में Indians को include कराया गया. Right? Out है देखो negative ऐसे गया जो most critical point जो हम देखो जो separate electorate was granted to the हमारा landlords and Muslims. And mostly Muslims हमें देखिए and landlords as well. Okay. So there are provisions again important point हम देखिए दबा. और तमर जो size of the legislatures को बढ़ा गला center रे हो कि तमरा provinces हो the size of the legislature was increased. Still तमर indirect election continue हैला. In the power of the legislative council बर्तमान बढ़ा गला कि से questions पचारि परिवे वर्तमान additional questions पचारि परिवे supplementary questions पचारि परिवे budget discuss कर परिवे. They can ask for grants as well for the local government. They can ask grants so that their powers were increased. तमरो legislative council लो just one mere body नथला कि बस्ती चुपचाप. Plus Indians वन first time तमरो even executive council में include करा गला. Not only legislative council even executive council ले प्रथम थर पे इंडिया तमरो SP सिन्हा तमरो आसीथिले. Even तमरो secretary of state को भी council Indians में आसीथिले. And तमरो like separate electorate introduce करायतला और Muslims बना पे. तो आर एडवांटेज कोन जदि हम एडवांटेज टिके क्रिटिकली देखिबा एडवांटेज कोन गोटे दिन तो भलो ह एगुडा किछि किछि भलो हला कि बढ़े देले साइज ता बढ़े देले तमर टिके आउ टिके लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर टिके बढ़े देले ता टिके एटलीस्ट क्वेश्चन पचारि परिबो टिके डेलिब्रेशंस रे काम करे माने टिके डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर परिबो. राइट? एंड तमर गवर्नर जनरल एक्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन आसी गेले इट्स अ गुड थिंग. बट द वर्स्ट थिंग वाज दिस सेपरेट इलेक्टोरेट जोडा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जोडा पार्ट थिला. राइट? जोडा कि तमर it sowed the seeds of communalism, right? आप परे like during this time तम 1906 रे तमरो
मुस्लिम लीग हेतला और नवाब सलीमुल्लाह आगा खान एमा से लॉर्ड मिंटो को मिसी गिरी दे वर ग्रांटेड दिस मुस्लिम लीग बनै थिले ए बर्तमान मुस्लिम लीग को तेले पे माने सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम को दे देले परे हम देखिबा एटा गोटे गोटे विश्व मंजी भलिया काम देला परे हमरो like yes there was a compromise in 1916 Lucknow pact पे but again तमरो non cooperation movement परे that was gone and after that केबे भी हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड रहिलानी एंड तमरो yes finally हम कहबे एटा one of the reasons थिला स्टार्टिंग तमरो जो communalism seed पसी आइथिला and that led to the हमरो partition in India okay तारा क्रिटिसिज्म की चीज अच्छी तारा क्रिटिसिज्म देखिबा हमें कि veto power तमरो थिला गवर्नर एंड जनरल एंड गवर्नर का veto power थिला राइट स्वराज किछि दे नथिले एटा राइट नथिंग वाज स्वराज किछि तमरो जस्ट तमर लेजिस्लेटिव काउंसिल किछि टिके पावर देथिले हम एक्सपेंड कर देथिले हम पावर देथिले तम टिके कॉपी परिबो असेंबली बसी के टिके आउ टी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बटे इंडियन को ऐड कर देथिले ताको सेठी किछि नथिला डायरेक्ट इलेक्शन बर्तमान भी दे नथिले जो स्टिल इनडायरेक्ट इलेक्शन मोस्ट सीरियस जोडा हम ब्लो कहबा केला और सेपरेट इलेक्टेड टू मुस्लिम बिकॉज़ डिवाइड एंड रूल हमर पार्ट थिला consequences of separate electorate देखिबा long term consequences थिला आरो राइट ये मुस्लिम मानन को अपीज करिया पय ताकर गोटे मेथड थिला राइट आ जोगु हमें कहि परिबा जो फ्यूचर रे तमरो जो हमर कम्युनिज्म सीड्स आसीगला जोडा कि परे हमर पाकिस्तान फॉर्मुला हमर द बैकग्राउंड एटा गोटे वन ऑफ द रीजंस थिला राइट सेपरेट इलेक्टोरेट जो स्टार्ट करते से माने हाँ आज जो फ्यूचर भी सिमिलर डिमांड्स उठिला तब 1919 ने तमरो यूरोपियंस को मिलला एंग्लो इंडियंस को मिलला सिक्स को मिलला 1935 रे तमरो जो वुमेन को मिलला तमरो एंड तमरो डिप्रेस्ड क्लासेस को मिलला राइट तो फ्यूचर रे सो डिमांड्स तमरो चलला बिकॉज़ ऑफ दिस सेपरेट इलेक्टोरल जिंस तो गोटे एटा डिसएडवांटेज हेगला आ गोटे हमें जो कोच इट सोड द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म तो दीटा प्रॉब्लम हेगला पॉजिटिव आर देखिले किछि डाउट केतरे कम्प्यूटर मीडिया एक्ट 1999 रे यस सिमिलर डेपुटेशन तमरो आगा खान जाइथिले लॉर्ड विंटर्स तो कथा हमें क्लियर राइट किछि एता सहज क्वेश्चन प्रोविजंस हम जानि छे एंड देन हमें लाइक क्रिटिसिज्म जानले जानछे सेकंड चार्जर लगे दिए ओके नेक्स्ट जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख दड़िए what significant role did the women play in the national movement ना एरा तो मैं कह दियो कोन डिस्कस करे मैं आंसर टा मु देखे देबी बेसी डिस्कस करे किछ नाही और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम डिस्कस करि छे तो ए पार्ट डिस्कस करबा को जल्दी को वुमेन मन का रोल को जल्दी जल्दी एरा हम डिस्कस करिवे नहीं एरा तुम जहां लिखियो एरा आंसर एरा हम कंक्लूड कर दवा जल्दी देखो वुमेन का रोल कौन थिला liquid shop picketing yes picketing in the liquid shops आउ नहीं उषा में तो अंडरग्राउंड रेडियो ठीक अछि कोई बार कार बोते इच्छा नहीं तले हमें आगु हमें डिस्कस कर दवा अच्छा किछि देखले अर्ली फेज रे तमरो हला रानी चन्नम्मा हजरत महल रानी लक्ष्मीबाई सरोजिनी नायडू सॉल्ट सत्याग्रह वेरी गुड थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया रानी बेसेंट हेगला कंट्रीब्यूशन टू तिलक फंड यस
फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस रानी लक्ष्मीबाई ओके ठीक है डिस्कस कर दबा जल्दी जल्दी डिस्कस करदबा किछि तो एटा हमें जमी लाइक तुम कहूल आंसर में तो बेसिकली आम वुमेन बहुत इंपोर्टेंट रोल थिला आम डिफरेंट फेजेस रे देखिबा तमरो लाइक इनिशियल अर्ली फेज रे आम देखिबा बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस हमरो फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस रानी लक्ष्मीबाई थिले तमरो हजरत महल थिले तमरो लखनऊ झांसी पर रानी लक्ष्मीबाई थिले हाउ दे फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश फर्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हम देखिचे एंड देन परे जदि हम देखिबा तमरो गांधीयन पॉलिटिक्स रे वुमेन को बहुत इंपोर्टेंट रोल थिला राइट काफी तंको गांधीयन पॉलिटिक्स रे they used to mobilize the masses by तमरो डिफरेंट मैजिक लैंटर्न शोज हे गला by तमरो मंजरी सेना हे गला सु मोबिलाइज करथिले पिकेटिंग करथिले तमरो सब लिक्विड शॉप्स राइट एंड खदी प्रमोट करथिले काफी बुली बुली जो आश्रम सरा बनै गिरी राइट हमरो ओडिसा रे देखो हमरो जो बारी आश्रम हे गला कि हमरो जो कटक रे हमरो आश्रम हे गला हमरो सरला देवी हे गले हमरो रमा देवी हे गले मालती देवी हे गले हमरो ओडिसा रे देखो हमरो कांग्रेस सरोजिनी नायडू हे गले एनी बेसेंट हे गले हमरो कांग्रेस प्रेसिडेंट थिले राइट होम रूल मूवमेंट रे ताका रोल थिला सरोजिनी नायडू हे गले से हमरो सॉल्ट सत्याग्रह धर्षण सत्याग्रह रे काफी इंपोर्टेंट रोल थिला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जाकी से गांधी से अटेंड करथिले सरोजिनी नायडू राइट एंड देन तम किछि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज देखि दियो हमरो जो चितागंग रेड रे तमरो प्रीतिलता वडेकर हे गला तम सुनीति चंदेरी हे गले कल्पना दत्त हे गले एमन तमरो चितागंग आर्मरी रेड रे सूर्यसेन से तो सपोर्ट करथिले आ कोन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हे गला गांधीयन पॉलिटिक्स रे तो एडा हे गला आउ काना में छाड़ीचे हां तमरो सीडीएम रे हमरो रानी गार्डिनेलु हे गले हमरो नागालैंड रानी गार्डिनेलु ठी किमिति ब्रिटिश को अपोज करथिले राइट एंड व्हाट एल्स बिकाजी कामा हे गले भारत माता जो न्यूज़पेपर सो पेरिस रे से बसी करथिले बिकाजी कामा मैडम बिकाजी कामा अरुणा असफ अली यस वेरी गुड अरुणा असफ अली हे गला हमर क्विट इंडिया मूवमेंट रे अरुणा असफ अली हे गला हमर उषा मेहता जो हे गला ऑल इंडिया रेडियो हे गला राइट अरुणा असफ अली तमरा अंडरग्राउंड मूवमेंट चले थिले राइट इवन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द फर्स्ट line leaders so she was leading the show right yes so एगला सब डिफरेंट जिंस हेला तो एथरे किछि बेसी नाही we know all the things हमको इंपोर्टेंट रोल थिला तांकर हमें तां कंट्रीब्यूशन पूरा सीरियल इन द लिस्ट कर दवा 10 बार क्वेश्चन बेसी किछि नाही हमें लिस्ट कर दवा जदी मु लिंक ता देई देबी देखि दवा आंसर ता राइट बेसी किछि नाही भी समस्त कर रोल उडा लिखिछि तो हमरो बेस स्टार्टिंग फ्रॉम हमरो रानी लक्ष्मीबाई टू हमरो हजरत महल हे गले देन हमरो आनी बेसेंट हे गले सरोजिनी नायडू हे गले हमरो रमा देवी हे गला हमरो सरला देवी हे गले मालती देवी हे गले हमरो लाइक रानी गार्डिनेलु हे गले हमरा चितागंग आर्मी रेड रे प्रीतिलता वडेकर हे गले सुनीति दत्त कल्पना दत्त हे गले सुनीति चंदेरी हे गले हमरो अरुणा असफ अली गले क्विट इंडिया मूवमेंट रे सरोजिनी नायडू हे गले हमरो सॉल्ट सत्याग्रह रे आरटीसी रे हे गला देन हमरो क्विट इंडिया मूवमेंट अरुणा असफ अली हे गले हमरो जो उषा मेहता हे गले राइट तो दी वाज लाइक डिफरेंट सोशल रिफॉर्म भी लिख परियो तमरे ठीक है ज्योतिबा फुले के विषय भी लिख परियो कि मीन से लाइक लोअर क्लास डिप्रेस्ड क्लासेस पे लरुतले ओके ठीक है तो एग्रास को तो इंपोर्टेंट रोल थिला ऑफ द वुमेन इन नेशनल मूवमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है एमके गांधी मेड अ ग्रॉस मिस्टेक इन चैंपियनिंग द खिलाफत cause an extra territorial issue which cut at the very roots of Indian nationality critically examined so do you support or you are against it tell me first कौन तुम पूछो do you support or you are against it हमें खिलाफत इश्यू को जो गांधी जी ज्वाइन कर देथिले नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट रे जोड़ी देथिले डू यू थिंक वाज इट राइट और विल गो फॉर और अगेंस्ट
ମୁଁ discussion କରିବି यार आंसर କିଛି ରଖିନି ମୁଁ discussion କରିବି any doubt you can ask me. Yes, I would say in support of this कि नहीं it was a right decision. ଯଦି ଆମ background ଦେଖିବା ତମର ମାନେ initially ତମର Hindu Muslim unity तमर थिला there was no such issue in fact in the war of independence सुनि दियो in the first war of independence in 1857 the Hindu Muslims they fought together there is no such feeling কিন্তু 1857 पर ठारू the Muslims the British they started playing the game of this divide and rule then again after the formation of the Congress we the same thing continued then finally Muslim League को से माने 1996 रे ताको पहले मुस्लिम लीग सेपरेट पार्टी फॉर्म करे देले टेलिंग दैट कि कांग्रेस माने तमको लाइक दबे दउछंती देन सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन तो हिंदू मुस्लिम भीतर टिके डिवीजन आसला 1999 पर गांधी जेतले आसिले ही सॉ दिस डिफरेंस कि तमर हिंदू मुस्लिम भीतर एमती डिवीजन हे जाईची so he wanted to unite both he was looking for an opportunity to unite both of them they चाहते यदि मिसिकरी हमर मुस्लिम लीग और national congress if they combinedly they demand for the independence of India and put pressure on the British government certainly it is going to put pressure on the government right so eta Gandhi ji karo like approach thila then he found the opportunity when the khilafat issue came up look tamara 1919 रे treaty of Versailles रे one of the treaty थिला तमरा treaty of Serbs treaty of Versailles से तमरा बहुत treaty 5टा treaty थिला तो तामे गोटे treaty थिला treaty of Serbs so treaty of Serbs से तमरा Ottoman empire को टुकड़े टुकड़े कर देथिले and this Turkey रो जे main the khalifa तांगर seat थिला when it was dismembered all over the world the Muslims they felt offended all over the world protest ହେଇଥିଲା against to put pressure on the British इसे को वापस नियंतु तो इंडिया भी ब्रिटिश जनगर कला कि तमे तम allies माने को ताकू तो वापस Ottoman empire को like तार past glory वापस दिया जाओ and India रे the movement started with when Shaukat Ali Muhammad Ali the Ali brothers हे गले Ajmal Hakim Ajmal Khan हे गले मौलाना आजाद हे गले एमाने सब लीड करथिले then when Gandhi ji asile Gandhi ji ko president kara gala all India khilafat committee da he led it and then because he wanted this as an opportunity to bond the Hindu Muslim unity because he knew that Muslims manakara ei khilafat issue the religious issue re jodi ame support karibu then the bonds of Hindu Muslim unity will be stronger and some British basically ladibe that was the intention see tamara 1920 August रे खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करथिले सितंबर 1920 रे तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करथिले ओडा खिलाफत इशू नेगरी सितंबर 1920 रे कांग्रेस को कन्विंस कर देले स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 रे तमरा आपको अप्रूवल दिया गला एंड इवन द कांग्रेस जॉइंड द खिलाफत कॉज द हिंदू मुस्लिम्स बोथ फॉट टुगेदर यूनिटी रे बट फाइनली द मूवमेंट फेल हो गला एंड ऑल अगेन माने दिस इज द वी कैन से it was about the Hindu Muslim unity was the peak at this occasion non-cooperation movement of the Hindu Muslim unity was at the peak it we never saw such such instance of Hindu Muslim unity in the future right so it is our khilafat issue so I will say in mane jo critically jo against coach against नहीं मतलब for कोई भी I would support this नहीं एटा सिमिति नथा कि ओडे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ओडे किछ ओडे थिला राइट जो बहुत जन कहउछन इट्स रिलीजियस इशू इट्स नॉट ए नेशनल इशू काहे कि ओडे रिलीजियस इशू उठेला रिलीजियस इशू उठिला सी ओडे विथ ए सर्टेन थिंकिंग इन माइंड ताको थिंकिंग राइट थिला कि सिमिति हिंदू मुस्लिम को पडुनी यदि हमें एबे भी खाली रह जा देन इट विल गो ऑन लाइक दैट ताको लास्ट अटेम्प्ट थिला कि हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी को पैच करिवो राइट टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट सही अटेम्प्ट रे से तमरा खिलाफत इशू को नहीं करी तमरा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जोड़ी देथिले दो इट वाज नॉट सक्सेसफुल नथिला बट दिस सॉ द पीक ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी जरा पूर्व देखाय नथिला
स्वदेशी मूवमेंट पर तमरा पीक थिला आ पर हमें सिमती हिंदू मुस्लिम को मिसिकी पार्टिसिपेशन नेशनल मूवमेंट रे कोटे भी देखि नाही राइट ताकू इतमे हमें पूरे नेगेटिव लेंस से देखिबा नाही पॉजिटिव लेंस से हम देखिबा ओके एनी डाउट इन दिस 10 मार्क क्वेश्चन दा आई थिंक we have enough point yes the only thing was to put pressure on the British government right only जो पिछला intention सही था okay so thank you all हमारा एडा sorry जाइची discussion like complete mock test 3 okay अब mock test 1 हो तो गोट दीरा बाकी थिला we'll see like sometime मुझे answer provide कर देबी I will discuss we'll see right so consider कि तो mock test 3 सॉरी गला mock test 1 भी सॉरी चला we'll see जदी किसी डाउट ला दिरा क्वेश्चन को कहबो ना पठे देबे okay yes so thank you all Thank you, sir. अच्छा आ गोटे कथा Thank you. कथा क्लास एंड रे कथा कहबी ओटे जेतोले like at some times right I know having a time is very important today define time रोएडा important की मु सकाळ 7 टा रे की संध्या 8 टा रे क्लास माने इवनिंग 8 टा रे क्लास करबी I should know that I completely respect that I agree you know at times there will be exceptions even you should respect that right so जदि मोर किछि जदि पर्सनल कमिटमेंट अछि मु काली पुणे ट्रैवल करछि मोर 5 दिन में रहिबिनी हला मोर सेति कंसर्न अछि कि मु तमर पाठ पढे कि जिबी मु काली सकाळ ट्रैवल करछि मु चाहथिले सदर क्लास टा कैंसिल कर परथांती हला बट मु चाहथिले कि नाही मु पूर्वरु नाही मु एटलीस्ट मोर जोडा अछि पार्ट टा मु कर दे कि पढेबी सो दैट एटलीस्ट मो माइंड रे चालीबनी कि हम रहि जाइछि मॉक टेस्ट 3 टा दैट वाज माय इंटेंशन तो तमे भी ताकू टी बेले बेले एट टाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज कि ठीक अछि जदि सर कहउछन 3 टा देयर शुड बी सर्टेन रीजन राइट मु जदि कहउछि ऑब्वियसली मु किछि मोर लग्जरी पई कहउनी किछि मोर मे बी पर्सनल कमिटमेंट रहि जाइछि जोडा कि मु मे बी 3 टा असुविधा हो मु एबे जदि करछि क्लास आई एम एटलीस्ट सैक्रिफाइस दे करछि मु राइट ए टाइम टा प्रॉब्लम मोर पैकिंग रे कि कोन करथानी मु 15 डेज में जाउछि मु आ कोन करथानी राइट सो सेति प्लीज एडा टिके मुंडे रख ऑलवेज एमिति स्टेटमेंट दियोनी कि जनरल स्टेटमेंट राइट एटा खराब लागे त एफर्ट देला पर पढेला पर जनरल स्टेटमेंट आसे ना कि सर हमें केमिति करिवु आपण बुझुना दी कोना दे खराब लागे राइट तो टिके सेही जिनसरा हम टिके टॉलरेंट हो राइट इट्स ओके गोटे क्लास तम संध्या कर दबो कोन असुविधा हे दियो इट्स नॉट अबाउट मी इट कैन बी अबाउट एनीबॉडी राइट मु भी तो ओके मु भी तुमको जेतु चाहू छी कि मु जीवा पर सारी के जीवी सेति मु तुमको सक 3 टा कहू दिन 3 टा मु तुम काई कहबी सेति में कहू छी कि मु भाबिल नै मु गला पूर्व मु सार देकी जीवी तमे जदि आज क्लास देखिबो दी क्लास पे ऑलमोस्ट 2 आवर्स हे छी माय ओनली इंटेंशन इज कि काई तुम एसम क्लास करली ताकि मु सार देबी मॉक टेस्ट 3 टा टिके से इंसला तमे सब नेगेटिव ये भाबनी कि जानि सुनी करछि कि इरेगुलर टाइम करे का इच्छा कार भी इरेगुलर टाइम को इच्छा नै केतले कोन फॉर एग्जांपल कालना पढनो कि सर कर देह भल नथिला दीपक सर कर कि ऑफलाइन क्लास वगैरह नै कि तम टिके देह खराब हेतिला सोई पड़तिले से ठीक अछि त पचा दे पर पोलाइटली गुडे वे भी अछि त पचा दे पर गुडे फोन कर दे पर पछि कोन हला कोन नै इट ऑलवेज थिंक इन दैट लेंस राइट सब भाबो देखो समस्त आस्पे जति कि स्ट्राइव करचंती सिमिति मोर देन एनी मॉनेटरी गेन एंड ऑल इट इज अबाउट हेल्पिंग तुमको हेल्प करबा तुम से तुम कोर्स किन साइड सेटा हम इंटेंशन राइट एटा एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट नो मोडे प्रोफेशनल टीचर नो कि मोडे प्रोफेशन नो मो प्रोफेशनल गा दिस प्रॉब्ली मु करछि मो पैशन पढे पे पैशन अछि तुम हेल्प करिया अछि तो व्हाटएवर रीजन तो सेटा मेन रीजन अछि राइट तो टिके से इनसा तमे गोटे रिक्वेस्ट मु जेतो ग्रुप पे डिस्कशन बेसी लंबा खिचिया चाहू नथली तो मु सेते मु चेंज कर दे टाइम गोटे रिक्वेस्ट की जेतबेले किए भी एवला किछि रिक्वेस्ट करछोदी ताको तुम चेष्टा करो तमे अकोमोडेट के करियो ठीक अछि थैंक यू ऑल गुड नाइट